हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 3 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sati@iitk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चन नंबर 1। तो एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़कर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, सही आंसर करना है। सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो एक रूल की बात की जा रही है। हैव द पोटेंशियल टू टर्न अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इनटू अ डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी। तो उसके अंदर एक पोटेंशियल है। विद ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर टू गो बिफोर द रूल्स टेक इफेक्ट, there is enough time to create the necessary infrastructure for collection, dismantling and recycling of electronic waste. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिसमेंटलिंग करने की बात चल रही है और रिसाइकलिंग करने की बात चल रही है। द फोकस मस्ट बी ऑन सिंसियर एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। फोकस जो है वो सिंसियर और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन पे है। Only decisive action can reduce the pollution and health cost associated with India's hazardous waste recycling industry. If India can achieve a transformation, it will be creating a whole new employment sector that provides good wages and working conditions for tens of thousands. The legacy response of the states to even the basic law on urban waste, the municipal solid waste management and handling rules has been one of indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes. तो garbage को simply burn और dump करने की बात चल रही है। With the emphasis now on segregation of waste at source and recovery of materials. Segregation की बात चल रही है। It should be feasible to implement both set of rules efficiently. A welcome feature of the new e-waste rules is the emphasis on extended producer responsibility. In other words, अन्य शब्दों में अगर बात की जाए, producers must take responsibility for the disposal of end-of-life products. For this provision to work, they must ensure that customers who sell scrap get some form of financial incentive. The e-waste rules, which derive from those pertaining to hazardous waste, are scheduled to come into force on May 1, 2012. Sound as they are, the task of scientifically disposing a few 100,000 tons of trash electronics annually depends heavily on a system of oversight by state pollution control boards (PCBs). Unfortunately, most PCBs remain unaccountable and often lack the resources for active enforcement. It must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs even under the Hazardous Waste Management, Handling and Transboundary Movement Rules 2008, there has been little practical impact. Over 95% of electronic waste is collected and recycled by the informal sector. So 95% of electronic waste जो कि collected किया गया, recycle किया गया by the informal sector. The way forward is for the PCBs to be made accountable for enforcement of the e-waste rules and the levy of penalties under environmental laws. Clearly, the first order priority is to create a system that will absorb the 80,000 strong workforce in the informal sector into the proposed scheme for scientific recycling. Facilities must be created to upgrade the skills of these workers through training, and their occupational health must be ensured. Recycling of e waste is one of the biggest challenges today. In such a time when globalization and information technology are growing at a pace which could only be imagined few years back, e-waste and its hazard have become more prominent over a period of time and should be given immediate attention. तो आशा करते हैं आप ऐसे समझ चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा, both sets of rules is being referred to which of the following? ऑप्शंस दिए गए हैं। 1. Solid waste and hazardous waste. 2. E-waste and hazardous waste.
3. Solid waste and e-waste. 4. E-waste and e-production. 5. Solid waste and recycling waste. दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने सही चुनाव किया है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 3 सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट। सोल्यूशन की अगर बात करें, द passage refers to both sets of rules, municipal solid waste management and handling rules and e-waste rules 2011. Here is why. The passage compares the municipal solid waste management and handling rules which have been implemented for managing general urban waste to the e-waste rules 2011, which are specifically for the management of electronic waste. It is emphasized that these two set of rules, though dealing with different types of waste, both focus on waste management and recycling. The passage explains that the municipal solid waste rules deal with general waste, example, garbage from homes, businesses, etc. And the implementation has been poor, with cities often burning waste or dumping it in lakes. The e-waste rules deal specifically with the disposal and recycling of electronic waste, example, old computers, phones, etc. Thus, the both sets of rules refer to solid waste management and e-waste management. Therefore, the correct answer is 3 solid waste and e-waste. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन पैसेज पढ़ लेते हैं। द ई-वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011. E-waste management and handling rules 2011 notified by the Ministry of Environment and Forest, तो इनके द्वारा नोटिफाई किया गया था, have the potential to turn a growing problem, तो the growing problem है उसको चेंज करने की पोटेंशियल लगता है into a developmental opportunity. With almost half a year to go before the rules take effect, there is enough time to create the necessary infrastructure for collection, dismantling and recycling of electronic waste. The focus must be on sincere and efficient implementation. Only decisive action and can reduce the pollution and health costs associated with India's hazardous waste recycling industry. If India can achieve a transformation, it will be creating a whole new employment sector that provides good wages and working conditions for tens of thousands. The legacy response of the states to even the basic law on urban waste. The municipal solid waste management and handling rules has been one of indifference. Many cities continue to simply burn the garbage and dump it in lakes, with the emphasis now on segregation of waste at source and recovery of materials. It should be feasible to implement both sets of rules efficiently. A welcome feature of the new e-waste rules is the emphasis on extended producer responsibility. तो एक वेलकम फीचर की बात चल रही है न्यू ई वेस्ट रूल्स के, वो एक एम्फेसिस एक जोर डाल रहा है किस चीज पे, ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अन्य शब्दों में अगर बात करें तो प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर द डिस्पोजल ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स। फॉर दिस प्रोविजन टू वर्क दे मस्ट एंश्योर दैट कंज्यूमर्स हु सेल स्क्रैप गेट सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो उनको इंश्योर करना चाहिए जो कंज्यूमर्स हैं जो स्क्रैप को सेल करते हैं उनको इंसेंटिव के तौर पे कुछ मिले। The e-waste rules, which derive from those pertaining to hazardous waste, are scheduled to come into force on May 1, 2012. Sound as they are, the task of scientifically disposing a few 100,000 tons of trash electronics annually depends heavily on a system of oversight by state pollution control boards (PCBs). Unfortunately, most PCBs remain unaccountable and often lack the resources for active enforcement. It must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs even under the Hazardous Waste Management, Handling and Transboundary Movement Rules 2008, there has been little practical impact. Over 95% of electronic waste is collected and recycled by the informal sector. The way forward is for the PCBs to be made accountable for
enforcement of the e-waste rules, and the levy of penalties under environmental laws. Clearly, the first order priority is to create a system that will absorb the 80,000 strong workforce in the informal sector into the proposed scheme for scientific recycling. Facilities must be created to upgrade the skills of these workers through training, and their occupational health must be ensured. Recycling of e-waste is one of the biggest challenges today. In such a time when globalization and information technology are growing at a pace which could only be imagined few years back, e-waste and its hazards have become more prominent over a period of time and should be given immediate attention. So directions की अगर बात करें, choose the word which is the most opposite in meaning of the word printed in bold as used in the passage. The word is feasible. Options दिए गए हैं 1 unattended, 2 physical, 3 practical, 4 unviable and 5 wasteful. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आई होप आपने सही चुनाव किया है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा 4 अनवायबल. सॉल्यूशन की अगर बात करें, in the passage, feasible means something that is possible or practical to do. When the author talks about implementing the rules for e-waste management, they emphasize that it should be feasible. Example, it should be achievable or realistic. 4. Unviable. This is the opposite of feasible. If something is unviable, it means it is not practical, possible, or able to succeed. So, unviable is the most appropriate antonym for feasible, as it directly means something that is not capable of being done or achieved. आई होप आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अगेन पैसेज पढ़ लेते हैं. The e-waste management and handling rules 2011 notified by the Ministry of Environment and Forest have the potential to turn a growing problem into a developmental opportunity. With almost half a year to go before the rules take effect, there is enough time to create the necessary infrastructure for collection, dismantling, and recycling of electronic waste. The focus must be on sincere and efficient implementation. Only decisive action can reduce the pollution and health costs associated with India's hazardous waste recycling industry. If India can achieve a transformation, it will be creating a whole new employment sector that provides good wages and working conditions for tens of thousands. The legacy response of the states to even the basic law on urban waste, the municipal solid waste management and handling rules, has been one of indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes, with the emphasis now on segregation of waste at source and recovery of materials. It should be feasible to implement both sets of rules efficiently. A welcome feature of the new e-waste rules is the emphasis on extended producer responsibility. In other words, producers must take responsibility for the disposal of and of live products. For this provision to work, they must ensure that consumers who sell scrap get some form of financial incentive. The e-waste rules, which derive from those pertaining to hazardous waste, are scheduled to come into force on May 1, 2011. Sound as they are, the task of scientifically disposing a few hundred thousand tons of trash electronics annually depends heavily on a system of oversight by state pollution control boards (PCBs). Unfortunately, most PCBs remain unaccountable and often lack the resources for active enforcement. It must be pointed out that all the agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs even under the Hazardous Waste Management Handling and Transboundary Movement Rules 2008. There has been little practical impact. Over 95% of electronic waste is collected and recycled by the informal sector. The way forward is for the PCBs to be made accountable for the enforcement of the e-waste rules and the levy of penalties under environmental laws. Clearly, the first order priority is to create a system that will absorb the 80,000 strong workforce in the informal sector into the proposed scheme for scientific recycling. Facilities must be created to upgrade the skills of these workers through training, and their occupational health must be ensured. Recycling of e-waste is one of the biggest challenges today.
In such a time when globalization and information technology are growing at a pace which could only be imagined few years back, e-waste and its hazards have become more prominent over a period of time and should be given immediate attention. तो क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not true in the context of the passage? ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शंस हैं, some form of financial incentive is recommended for the producers. 2. Some financial incentive is recommended for the consumers. 3. E-waste will be a few hundred thousand tons. 4. The agencies handling e-waste have to obtain environmental clearances. 5. Those involved in e-waste management would need to upgrade their skills. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन को चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आई होप आपने आपका सही चुनाव है. आई होप आपने सही चुनाव किया है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 1. सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिकमेंडेड फॉर द प्रोड्यूसर्स. सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज 1. Incorrect. The passage actually states the producers must take responsibility for the disposal of end of life products, and for this provision to work, they must ensure that consumers who sell scrap get some form of financial incentive. This suggests that the incentive is for the consumer, not the producers. Thus, the statement that is not true is option 1, as the financial incentive is intended for consumers, not producers. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो दिस इज द सेम पैसेज है. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शंस. चूज अ वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज इन द पैसेज. तो द वर्ड इज टर्न. ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शंस हैं 1 थ्रो, 2 चांस, 3 सेंड, 4 ट्रांसफॉर्म और 5 रोटेट. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन को चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आई होप आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा 4 ट्रांसफॉर्म. सोल्यूशन की अगर बात करें, in the context of the passage, the word turn is used in the sense of changing or causing a change. The phrase turn a growing problem into a developmental opportunity implies the act of transforming or changing something, in this case, e waste, into something better or more beneficial. Thus, transform, option 4, is the most appropriate synonym as it aligns with the meaning of turning a problem into an opportunity. आई होप आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. पैसेज पढ़ लेते हैं. The e-waste management and handling rules 2011 notified by the Ministry of Environment and Forest have the potential to turn a growing problem into a developmental opportunity. With almost half a year to go before the rules take effect, there is enough time to create the necessary infrastructure for collection, dismantling and recycling of electronic waste. The focus must be on sincere and efficient implementation. Only decisive action can reduce the pollution and health costs associated with India's hazardous waste recycling industry. If India can achieve a transformation, it will be creating a whole new employment sector that provides good wages and working conditions for tens of thousands. The legacy response of the states to even the basic law on urban state waste, the municipal solid waste management and handling rules has been one of indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes, with the emphasis now on segregation of waste at source and recovery of materials. It should be feasible to implement both sets of rules efficiently. A welcome feature of the new e-waste rules is the emphasis on extended producer responsibility. In other words, producer must take responsibility for the disposal of end-of-life products. For this provision to work, they must ensure that consumers who sell scrap get some form of financial incentive. The e-waste rules, which derive from those pertaining to hazardous waste, are scheduled to come into force on May 1, 2012. Sound as they are,
the task of scientifically disposing of few hundred thousand tons of trash electronics annually depends heavily on a system of oversight by state pollution control boards (PCBs). Unfortunately, most PCBs remain unaccountable and often lack the resources for active enforcement. It must be pointed out that all the agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs even under the Hazardous Waste Management Handling and Transboundary Movement Rules 2008. There has been little practical impact. Over 95% of electronic waste is collected and recycled by the informal sector. The way forward is for the PCBs to be made accountable for enforcement of the e-waste rules, and the levy of penalties under environmental laws. Clearly, the first order priority is to create a system that will absorb the 80,000 strong workforce in the informal sector into the proposed scheme for scientific recycling. Facilities must be created to upgrade the skills of these workers through training, and their occupational health must be ensured. Recycling of e-waste is one of the biggest challenges today. In such a time when globalization and information technology are growing at a pace which could only be imagined few years back, e-waste and its hazards have become more prominent over a period of time and should be given immediate attention. आशा करते हैं आप पैसे समझ चुके हैं. क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है which of the following rules has not been indicated in the passage. ऑप्शंस दिए गए हैं. 1. E-waste rules 2011. 2. Pollution check rules. 3. Hazardous waste rules 2008. 4. Municipal solid waste rules. 5. All above have been indicated. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आई होप आपने सही ऑप्शन का चुनाव किया है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा 2. पोल्यूशन चेक रूल्स. सोल्यूशन की अगर बात करें, the passage indicates all the above rules except for pollution check rules. E-waste rules 2011 is mentioned in the very first sentence. The e-waste management and handling rules 2011 notified by the Ministry of Environment and Forest have the potential to turn a growing problem into a developmental opportunity. Hazardous waste rules 2008 is mentioned in the sentence. It must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs even under the Hazardous Waste Management Handling and Transboundary Movement Rules 2008, there has been little practical impact. Municipal solid waste rules is mentioned in the sentence. The legacy response of the states to even the basic law on urban waste. The municipal solid waste management and handling rules has been one of indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes. आशा करते हैं आप सॉल्यूशन समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो दिस इज द सेम पैसेज. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इंप्लीमेंट बोथ सेट्स ऑफ रूल्स. ऑप्शंस है. ऑप्शन 1 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ऑप्शन 2 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. ऑप्शन 3 फाइनेंशियल इंसेंटिव. ऑप्शन 4 सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स. ऑप्शन 5 हेल्थ कॉस्ट. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर इज 4 सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स. सोल्यूशन की अगर बात करें, according to the passage, the implementation of both sets of rules, the municipal solid waste management and handling rules, the e-waste rules 2011, requires a focus on the segregation of waste at source. Here is the relevant part from the passage. With the emphasis now on segregation of waste at source and recovery of materials, it should be feasible to implement both sets of rules efficiently. This means that segregating waste at the source, example separating different types of waste before disposal, is a key measure to effectively implement both solid waste and e-waste management rules. Segregation helps ensure that recyclable materials can be handled properly, reducing pollution and facilitating
the recycling process. Thus, segregation of waste at source is crucial for the effective implementation of both sets of rules, making option 4 the correct answer. आई होप आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम पैसेज, क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई-वेस्ट रूल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दोज पर्टेनिंग टू। ऑप्शंस है 1 हैजार्डस वेस्ट, 2 पीसी वेस्ट, 3 कंप्यूटर वेस्ट, 4 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, 5 नेशनल वेस्ट। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 1 हैजार्डस वेस्ट। सॉल्यूशन की अगर बात करें, द पैसेज एक्सप्लिसिटली states that e-waste rules are derived from those pertaining to hazardous waste. Here is the relevant part from the passage. The e-waste rules which derive from those pertaining to hazardous waste. This means the framework and the principles established for handling hazardous waste were used as the basic for creating the rules for managing electronic waste, e-waste. Since e-waste is considered hazardous due to its toxic components, it is treated similarly to other hazardous waste under these rules. Thus, the correct answer is 1 hazardous waste. आई होप आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन सेम पैसेज, क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई वेस्ट रूल्स केम कम इनटू फोर्स फ्रॉम। ऑप्शंस हैं 1 2008, 2 2009, 3 2010, 4 2011, 5 2012। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने सही ऑप्शन चुना है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5 2012। सोल्यूशन की अगर बात करें, according to the passage, the EVS rules are scheduled to come into force on May 1, 2012. The passage mentions the EVS rules, which derive from those pertaining to hazardous waste, are scheduled to come into force on May 1, 2012. This clearly indicates that the rules will be effective starting from May 1, 2012, making 2012 the correct answer. I hope आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन सेम पैसेज। Question directions. Choose the word which is the most opposite in meaning to the word printed in bold as used in the passage. The word is indifference. तो हमारा जो शब्द है वो इंडिफरेंस है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 इंटरेस्ट, ऑप्शन 2 डिफरेंस, ऑप्शन 3 इग्नोरेंस, ऑप्शन 4 रूल बाउंड, ऑप्शन 5 इनसिग्निफिकेंस। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने सही ऑप्शन का चुनाव किया है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 1 इंटरेस्ट। सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage, indifference refers to a lack of concern, care, or interest in something. Specifically, the author mentions the states that states have shown indifference towards the implementation of certain waste management rules, meaning they have not cared enough to actively address or solve the problem. 1. Interest. This is the opposite of indifference. If someone has interest in something, they care about it and are actively involved or concerned about it. Thus, the best antonym for indifference in this context is interest, as it implies care or concern, the opposite of indifference. आई होप आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन द सेम पैसेज। क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो द वर्ड इज पोटेंशियल। ऑप्शन दिए गए हैं 1 इंटेलिजेंस, 2 एप्टीट्यूड, 3 पॉसिबिलिटी, 4 पोर्शन एंड 5 विल। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 3 पॉसिबिलिटी। सॉल्यूशन की अगर बात करें, in the context of the passage, the word potential refers to something that could happen in the future or has the capacity to happen. तो जो पोटेंशियल वर्ड है वो किस चीज को रेफर कर रहा है? जो चीजें हो सकती हैं भविष्य में और उनके अंदर कैपेसिटी है होने की। The phrase have the potential to turn a growing problem into a developmental opportunity suggests that there is an inherent possibility or capacity for the problem e-waste to be transformed into something positive, a developmental opportunity. Thus, possibility option 3 is the most appropriate synonym for potential in this context as it refers to something that could happen or is capable of happening. आई होप आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, सेम पैसेज। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉर्नर्स ऑफ द पैसेज। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1, नो सिटी डम्प्स इट्स वेस्ट इन लेक्स। 2, some cities burn garbage। 3, PCBs have adequate resources for active enforcement। 4, e-waste was a much bigger challenge in the past। 5, none of the above। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने सही चुनाव किया है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 2, सम सिटीज बर्न गार्बेज। सोल्यूशन है, इन द पैसेज द ऑथर मेंशन्स द फॉलोइंग रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट in Indian cities. The legacy response of the states to even the basic law on urban waste, the municipal solid waste management and handling rules, has been one of the indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes. This clearly indicates that some cities burn garbage as a way of handling waste, which is a form of improper waste disposal. तो एक improper waste way है ये dispose करने का. This option aligns with the information provided in the passage. Therefore, option 2 is the correct answer. I hope आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the same passage. Question of the word which is most nearly the same in meaning of the word printed in bold as used in the passage. Clearance. Options दिए गए हैं 1 cleaning, 2 permission, 3 sale, 4 remedy and 5 clarity. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 2 परमिशन। सॉल्यूशन है, in the context of the passage, clearances refers to the process by which agencies handling e-waste must obtain environmental clearances to be authorized to operate. This means that they need formal permission or approval from the regulatory authorities such as the State Pollution Control Board (PCBs). So permission option 2 is the correct meaning of clearance in this context. I hope आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, the same passage. Question है which of the following can be one of the byproducts of effective e-waste management. Options दिए गए हैं 1, India can guide other countries in doing so. 2, it will promote international understanding. 3, it will promote national integration. 4, it will create a new employment sector. 5, it will further empower judiciary. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने सही ऑप्शन चुना है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा 4, इट विल क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। सोल्यूशन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इफेक्टिव ई-वेस्ट मैनेजमेंट कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ होल न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो एक होल न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को क्रिएट करेगा, लीड करेगा उसे, उसके क्रिएशन को। दैट प्रोवाइड्स गुड वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये प्रोवाइड करेगा गुड वेजेस और वर्किंग कंडीशंस फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। द पैसेज explicitly mentions that by properly implementing the e-waste rules, India can transform the hazardous waste recycling industry into an opportunity.
तो इंडिया ट्रांसफॉर्म कर सकती है हैजार्डस वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी में, जो कि क्रिएट करेगी जॉब्स को, क्रिएटिंग जॉब्स एंड इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कफोर्स इन्वॉल्व्ड। Thus, the four, it will create a new employment sector is the correct answer as it directly relates to the benefits outlined in the passage. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सेम पैसेज। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज इंपॉर्टेंट नाउ फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट? ऑप्शंस हैं 1 मेकिंग रूल्स, 2 रिव्यूइंग रूल्स, 3 इम्प्लीमेंटिंग रूल्स, 4 नोटिफाइंग रूल्स एंड 5 अमेंडिंग रूल्स। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने सही ऑप्शन का चुनाव किया है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 3 इम्प्लीमेंटिंग रूल्स। सॉल्यूशन की अगर बात करें, the passage emphasizes that the focus must be on sincere and efficient implementation of the e-waste rules. The rules themselves have already been notified, but the key challenge is their implementation to ensure proper collection, dismantling, and recycling of electronic waste. The passage mentioned that only decisive action can reduce the pollution and health costs associated with India's hazardous waste recycling industry, and it stresses the need for efficient implementation rather than just creating, reviewing, or notifying rules. Thus, 3. Implementing rules is the correct answer as it is the critical task highlighted in the passage. Next question की ओर बढ़ते हैं। Question number 15, again the same passage. Which of the following best explains the meaning of the phrase which could only be imagined few years back as used in the passage? Options हैं 1. It was doomed. 2. It took us few years. 3. It took us back by few years. 4. Imagination is better than IT. 5. None of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो आई होप आपने सही ऑप्शन चुना है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 5 नन ऑफ द अबव। सोल्यूशन की अगर बात करें, द फ्रेज व्हिच कुड ओनली बी इमेजिन्ड फ्यू इयर्स बैक रेफर्स टू द रैपिड पेस ऑफ globalization and information technology growth. It highlights that level of technological advancement and globalization we are experiencing today was unimaginable just a few years ago. In other words, the changes have happened so fast that they were beyond what people could foresee or envision a few years ago. The passage mentions in such a time globalization when globalization globalization and information technology are growing at a pace which could only be imagined few years back. This means the growth of globalization and information technology has been so swift and dramatic that it was hard to predict or imagine the current scenario just a few years ago. Thus, none of the provided options accurately reflects the intended meaning, making none of the above the correct answer. तो आशा करते हैं आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।